Hi everyone, I welcome you again to my channel where we are talking about multiple sclerosis. So last video में हमने जैसे बात किया था कि why I call 2017 as the black year of my life क्योंकि as I explained or as I talked about it in that video that कैसे back to back attacks आया था और किस तरह का attacks आया था and all, right? So if you want to understand the kind of attacks that I had, you have to go back to that video and listen to it. आज मैं एक particular topic cover करना चाहती हूँ which is like what is multiple sclerosis और diagnosis कैसे होता है because there is awareness जो है वो it's lacking. Like till the time I was not diagnosed with multiple sclerosis मुझे भी नहीं पता था कि ये होता क्या है. In fact 2015 when I was diagnosed पहली बार मैंने ये वर्ड तभी सुना था फ्रॉम माई डॉक्टर, राइट, व्हेन ही सेड दैट ओके यू हैव मल्टीपल सेरोसिस. दैट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कि ऐसा भी कोई डिजीज़ होता है, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ इट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या कर सकते हैं इसके बारे में, राइट. सो टू स्टार्ट कि MS होता क्या है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2015 मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, ओके, बिकॉज व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड everything came as a shock to me. I was honestly devastated, right. To understand what the doctor was saying was very much of a trouble for me. तो मुझे समझ में नहीं आया था. So आज after so many years and after studying about MS quite a bit, now I'm aware कि MS होता क्या है. So for those who are not aware of it, multiple sclerosis, like we call it abbreviation में MS, right, commonly known as MS. It is a disease of a central nervous system, which means brain का बीमारी है, right. अब brain is the most important function in somebody's body, isn't it? So अब इसमें होता क्या है, this is an autoimmune disease. अब autoimmune का मतलब क्या है, right? Immune का मतलब तो हम सबको पता है, like we talk also, right? उसका immune system बहुत अच्छा है, उसका immunity अच्छा नहीं है. So we talk about that, right? So we understand कि अगर किसी का immune system अच्छा है तो that person's body can fight the viruses that attacks that particular person. That's what it means, right. यहाँ पे ये बहुत ही अजीब बीमारी है. I was also very confused कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही गुड सेल्स को अटैक कर रहा है ये सोच के कि ये बैड सेल्स है. To be very explain it in the most simplest manner. Yeah, so I used to question भाई अपना ही इम्यून सिस्टम क्यों किस खुशी में अटैक कर रहा है यार. And but then there's no answer, right. So that is what it is, right. So when your own immune system is attacking your good cells, तो ब्रेन के अंदर जो माइलिन शीट होता है उसमें ना धब्बा आ जाता है. इट्स लाइक पैचेस. सो जो ब्रेन MRI, सो जो ब्रेन का जो MRI होता है, एक MS पेशेंट का ब्रेन और एक नॉर्मल पेशेंट का ब्रेन में देयर इज वन पर्टिकुलर डिफरेंस कि जिसका जिसको MS है उसका ब्रेन में यू विल सी अ लॉट ऑफ वाइट पैचेस. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज MS, wherein your own immune system is attacking your good cells in your body which is in your brain and it is an autoimmune disease, right. अब ऑब्वियसली बीमारी है तो हम ये जानना चाहते हैं एवरीवन कि भैया ये होता क्यों है. अब इसका आंसर मेरे पास नहीं है क्योंकि इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है. सो द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट दे हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू कि ये होता क्यों है या कैसे होता है, बट देन नोबडी इज अवेयर ऑफ इट टिल नाउ. एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी रेयर डिजीज एंड इट हैपन्स टू 1 in a million, आई गेस. सो या वी आर द लकी वंस. यही बोल सकती हूँ मैं, राइट. या सो ये बहुत रेयर है एंड वी रियली नोबडी नोज कि इसका कॉज क्यों है एंड ऑल्सो देयर इज नो क्योर फॉर इट. सो जो ये अटैक्स हो रखा है एंड द माइलिन शीट में जो पैचेस हो रखा है वो डैमेज्ड रिपेयर नहीं हो सकता. द ओनली थिंग दैट वन कैन डू इज
कि कंट्रोल में रखो अपना डिजीज़ को, राइट, ताकि वो जो डैमेज है वो और इंक्रीज ना हो. Okay, and when we talk about how it can be diagnosed, you cannot diagnose MS with a blood test or urine test. उससे diagnose नहीं होता है MS. उसके लिए MRI करना होता है. ठीक है. So ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का MRI is required. Why? Because it is a brain and a spinal cord related disease, right? स्पाइनल कॉर्ड आपका ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड है. दिस दैट ब्रेन आपका स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है, एंड दैट इज हाउ योर सेंसेशन, यू गेट द सेंसेशन, लाइक यू कैन वॉक, यू कैन लिफ्ट योर हैंड, एवरीथिंग, राइट. सो ये दोनों अगर आपका डैमेज्ड है तो फिर देयर कुड बी अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट कैन अराइज, जिसको हम कहते हैं MS का अटैक और रिलैप्सेस जो होता है, राइट. सो एवरीवन जिसको MS हुआ है, दे विल गो थ्रू वन और द अदर सिम्टम्स. ओके, सो सिम्टम्स भी ऐसा होता है कि नोबडी, अगर आपको MS के बारे में पता ही नहीं है तो यू कैन नॉट इवन थिंक कि ये भी हो सकता है काइंड, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या क्या हो सकता है. वैसे लिस्ट तो मेरे पास नहीं है, बिकॉज it is list का मतलब there could be anything. As I spoke in the earlier videos, I started slurring. I could not speak. That was one attack. But after that also I got multiple attacks. No, I was blind for 3 months, right? I could not see, like total darkness. Not just that, there used to be sensation in my right leg. आई यूज टू सी डुअल विजन, तो मुझे 2-3 लोगों का 2-3 कान दिखता था या 2-3 नाक दिखता था, सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. इवन आई गॉट दोज मिनी पैरालिसिस अटैक फॉर couple of seconds जिसमें आई कुड नॉट वॉक एंड आई हैड टू जस्ट स्टैंड फॉर सम टाइम टू गेट दैट पास अवे. सो ये सिर्फ फ्यू ऑफ द अटैक्स है जो मेरे साथ हुआ है, बट आप अगर देखोगे तो बहुत लोगों के साथ अलग अलग तरह का अटैक्स दे माइट हैव गॉन थ्रू इट. सो it's like various attacks. We really don't know कि क्या क्या हो सकता है. Only a neurologist will be able to identify पहले तो, ठीक है. So that's one thing, that it needs to be diagnosed with an MRI with plain MRI भी करा सकता है डॉक्टर आपका, और it could be with contrast में आपका वही इंजेक्शन लगा देते हैं, राइट. कैनुला आपका डाल के बीच में they'll just like inject you. I really don't know what उससे आई हैव हर्ड कि क्लियरर दिखता है विजन, आई मीन लाइक MRI में. सो दैट कुड बी द रीजन वाई. सो एंड या आई मीन 1-1 घंटे तक आई यूज टू बी इन द MRI मशीन व्हेन आई हैड टू डू माई इंटायर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का MRIs, राइट. सो ये चीज़ है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ MS फॉर यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको ऑलरेडी MS है, दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ देयर attacks and how they go through and everything. But जिनको नहीं है, it is important to know for them also, right, कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. So this is just purely I'm talking about MS awareness. That is important because till now we really are not aware that there is a disease which is an autoimmune disease, and it goes by the name of multiple sclerosis. So this name is important, right? It could change somebody's life like it has changed mine. I mean, like, I think before MS me was a different person, and after MS me is totally a different person. It has in fact given a different perspective to my life. और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि MS has been a blessing in disguise for me. वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगी, बट टुडे आई जस्ट वांटेड टू टॉक कि MS होता क्या है, राइट. सो प्लीज़ ये नोट कर लेना कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़, एंड हमें रीज़न नहीं पता कि क्यों होता है, एंड देयर इज़ नो क्योर. सो जब पहले जब डायग्नोज हुआ था तो यू यूज्ड टू फील वेरी होपलेस. नहीं, अगर कोई आपको बोल दे कि ओके यू हैव अ क्रोनिक डिजीज़, जो कि एक डिसेबिलिटी डिजीज़ के अंदर आता है और उसका कोई क्योर भी नहीं है. सो हाउ होपलेस यू विल फील, राइट. दैट्स हाउ आई यूज्ड टू फील, एंड आई यूज्ड टू फील दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे वाई, बिकॉज आई एम सेइंग आई रियली वांटेड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री. बट जैसे अगर कहीं इवन इफ आई ट्राई टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन लेट्स से US, राइट, और एनीवेयर एल्स ऑल्सो, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल फॉर US, वहाँ पे ना वो फॉर्म में दे विल आस्क यू
do you have any pre-existing disease or do you have any disability, और आप उसमें डिसेबिलिटी में कौन से डिजीजेज आते हैं उनका लिस्ट अगर देखो तो यू विल सडनली सी मल्टीपल सिरोसिस लिस्टेड देयर, एंड देन यू वंडर डू आई टिक एज आई एम डिसेबल्ड, क्योंकि आई एम नॉट डिसेबल्ड, राइट. अब क्योंकि वाई आई एम सेइंग इज कि मल्टीपल सिरोसिस हर एक बंदे को अलग तरह से इफेक्ट करता है, राइट. सम पीपल माइट बी डिसेबल्ड, सम पीपल माइट नॉट. Like I remember asking my doctor once, because I had seen all those, right? I went and I asked him, does everyone land up in a wheelchair? And doctor said, नहीं ऐसा नहीं होता, अपना ही कोर्स होता है हर एक पेशेंट का, राइट. जैसे मेरे को रेमिटिंग रिलैप्सिंग एमएस है, सो मुझे रिलैप्सेस होता है, लाइक रिलैप्स को कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट. कई लोगों का फिर प्रोग्रेसिव एमएस होता है, विच इज़ लाइक वो फिर प्रोग्रेस ही होता जाता है. सो व्हेन इट प्रोग्रेसेस then those people might get attacks very frequently and that might lead to disability. ठीक है, but see it's all about having hope, right? It's like faith में तो I think दुनिया कायम है, and that's all one can have, I guess, कि just pray that it is under control. And yeah, there are a lot of medication, so this medication is also lifelong. So if you are a MS patient, medication you have to take it until you die, क्योंकि I am taking a medicine and it's been a very long time and काफ़ी सालों से relapses हुआ भी नहीं है, then I think ना लूँ तो चलेगा. But then the answer is कि medicine ले रहे हो इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना. So not taking the medicine is out of question, right? So we have to take medicine and then continue living, of course, the way it is, and take charge and take control of your own life. That's all I can say. And don't be disheartened. Life is unpredictable, but I don't know. I might be getting a little emotional. So yeah, I mean, it's all about fighting back, and I'm sure we will see that light at the other side of the tunnel. That's important, right? तो फाइट करते रहना चाहिए, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट. एवरीवन हैज़ देयर ओन पाथ, राइट. सो ठीक है, आज हमें एमएस हुआ है, विच इज़ फाइन. सो एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, एंड हमें सिर्फ ये नहीं पता कि व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, हमें ये भी पता है कि हमें फाइट कैसे करना है. वी हैव सच गुड न्यूरोलॉजिस्ट हु आर ट्रीटिंग अस, who are giving us medicines, जिससे हमारा MS अभी कंट्रोल में है और उसको कंट्रोल में ही रखना है. So that should be our motive, that उसको कंट्रोल में ही रखना है. We cannot let that wander, right? That's all I can say for now, and I hope that has given all of us a little more clarity on what is MS and how it can be diagnosed. Right, and rest I'll cover more on my other upcoming videos. Please do not forget to subscribe. Thank you.